Hello aspirants, welcome to Agri Learners YouTube channel. Today we are going to discuss agroforestry topic which is very important with respect to agriculture related examinations. Hi, this is Sonali, your mentor on agriguru.in. So before start this topic, I would like to congratulate the people who have cleared their IBPS AFO preliminary examination, and also good luck to all of them who are going to attend the IBPS AFO mains examinations. So before start this topic, I would like to say one more thing, that please like, share and subscribe this channel for more updates. Let's start the topic. So in this topic we are going to study agroforestry in 4 parts. The first one will be benefits of agroforestry, जिसमें हम देखेंगे definition, origin and some general aspects of agroforestry. In the second part we will learn about types of agroforestry in non-forest areas. Number 3 is the classification of agroforestry system, जिसमें हम different aspects of agroforestry के बारे में learn करेंगे. And the fourth one is the limitations of agroforestry. Let's get started. We all know that trees play a very important role in our terrestrial ecosystem because they provide a range of products and services to rural and urban people. So here comes the definition of agroforestry. Whenever we integrate trees into agricultural system, this practice is known as agroforestry. I hope you all get my point. The integration of trees or the forest ecosystem into agricultural system is known as agroforestry. So you all know that agroforestry is a very ancient practice. It focuses upon wide range of trees grown on farms and other rural areas. So what is this exactly? Agroforestry is a collective name for land use systems involving trees combined with crops and animal husbandry on the same unit of land. This means it uses the resources very judiciously. It combines the production of multiple outputs with protection of resource bases. This emphasis on the use of multiple indigenous trees and shrubs, particularly suitable for low input conditions and fragile environment. It involves the interplay of socio-cultural values more than in those other land use ecosystems. It is structurally and functionally more complex than monoculture. So, though it seems more complex than monoculture, still it plays very important role in our socio-cultural values. Here, the input level is generally low, and we can also practice agroforestry generally in the fragile environments. Means the microclimate is given importance in agroforestry practices. So what is the benefits of agroforestry? It has different aspects. The first one is environmental benefits. Combining trees with food crops and cropland farms yield certain important environmental benefits, both general ecological benefits as well as specific on-site benefits. We will learn it in the next slides. What are the general ecological benefits? It reduces the pressure upon forest, means the rate of deforestation is generally reduced whenever we practice agroforestry. Most efficient recycling of nutrients by deep-rooted trees on site. So what is the point here? The efficient recycling of nutrients. Better protection of ecological system. As we reduce the pressure upon the ecosystem, so it leads to a better protection of ecological systems. Reduction of surface runoff, nutrient leaching and soil erosion through impending effect of tree roots and stem of this process. So whenever we reduce the cutting of trees, the soil erosion is automatically reduced, so that nutrient leaching and surface runoff can be controlled or can be reduced. So here comes the microclimate. Improvement of microclimate such as lowering of soil surface temperature and reduction of evaporation of soil moisture through a combination of mulching and shedding. So I have one question for you. What is the definition of mulching? Just write your answer in the comment section. Increment in soil nutrient through addition and decomposition of litter fall, improvement of soil structure through the constant addition of organic matter from decomposed litter. So 3 पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है. Ecological aspect of agroforestry या फिर environmental benefits of agroforestry. The first one is this reduces ecological pressure. The second thing is it improves soil nutrient as well as it reduces soil erosion. So how the soil in nutrient getting increased? By constant addition of organic matter and
efficient recycling of nutrients. Now comes to economic benefits of agroforestry. Agroforestry systems on cropland or farmland bring significant economic benefits to the farmer, to the community, and even to the region and the nation. How? The maintenance of output of food, fuel wood, fodder, fertilizer, timber. Whenever we get everything from a single unit of land with a very low input and even in the fragile environment, so it means it leads to improvement or increment in economic condition of farmer or the farming community. The next thing is reduction of incidence of total crop failure. Whenever your farming or even if your business is diversified, there is a reduction in the incidence of total crop failure, which is very common to the single cropping or monoculture system. Increase in level of farm income due to improved and sustained productivity. So sustained productivity, sustainable environmental practices, these are the benefits of agroforestry. So here comes the social benefits. As you all know, we do practice this agroforestry system in a single piece of land, so we may yield more than monoculture or single crop culture system. So as well as it improves the rural livelihood standard from sustained employment and higher incomes. It also improves nutrition and health conditions due to increased quality and diversity of food outputs. In the previous slides, we have already studied that there is a constant addition of organic matter which benefits the soil by doing efficient recycling of nutrients. In this way, we can get more nutrition and health benefits. Stabilization and improvement of upland communities through elimination of the need to sift sites of farm activities. So, sifting cultivation can be curbed or can be reduced by doing these integrated cultures. Now come to the types of agroforestry in non-forest areas. The number one is farm forestry. This name is given to the program which promotes commercial tree growing by farmers on their own land. What do you mean by commercial tree growing? Commercial tree means either for fuel wood or for timber. Okay. It is defined as the practice of forestry in all its aspects in and around the farms or village lands integrated with other farm operations. We usually cut trees to do farming or to do any kind of crop farming. But if in the unused lands we grow this kind of commercial trees or promote commercial tree growing, that must be benefited to the community or even to the farmer who is growing it in their own land. Next comes to extension forestry. Extension, the name itself suggests it is an extended thing, means whenever the areas devoid of tree growth or any kind of other vegetations situated in places away from the conventional forest areas, we practice forestry there. This is known as extension of forestry. So what is the objective of extension forestry? Mixed forestry, shelter belts, linear stripe plantation. What is mixed forestry? The fodder grass with scattered fodder trees, fruit trees and fuel wood trees on suitable wasteland, panchayat lands and village commons. So whenever we just leave a land without using it in any kind of sustainable work or any kind of developmental work, just we mix the thing like what? Fodder grass with scattered fodder trees, जो कि हमारे कैटल के ग्रेज करने में हेल्प करता है. We can also grow fruit trees, means the horticultural practice can be there also. And fuel wood trees. The fuel wood trees community को benefit करता है. And this kind of mixed forestry where we can practice in suitable wastelands, panchayat lands means the village and rural unused lands of the government. Okay, or the village commons. I hope you all get my point. Second thing is shelter belt. So what is shelter belt? Shelter belt means it is a belt of trees or shrubs maintained for the purpose of shelter from wind, sun, snowdrift, etc. Shelter belt is basically a shield to get rid of heavy or speedy wind, maybe for sun or maybe snowdrift.
Then it comes to linear strip plantation. These are the plantation of fast growing species on linear strips of land. Means some of the fast growing species on a linear strip of land can be grown in linear stripe plantation of agroforestry. Then the third point is rehabilitation of degraded forest. The degraded area under forest needs immediate attention for ecological restoration and for meeting the socio-economic needs of the communities living in and around such areas. आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज होते हैं, इंडिया में भी है और एंटायर वर्ल्ड में भी है, वो लोग डिपेंड करते हैं कंप्लीटली अपॉन द फॉरेस्ट लैंड फॉर देयर डेली नीड्स और देयर डेली एक्टिविटीज. सो उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जब एक फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जाता है उसके बाद वहां पे न्यू ट्रीज को भी ग्रो करने का रूल्स होता है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है. ये उन लोगों की और उन कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करता है जो कि वह उसके अंदर या फिर वो सराउंडिंग एरियाज में इनहैबिट करते हैं. देन द फोर्थ पॉइंट इज रिक्रिएशन forestry. It is the practice of forestry with the object of raising flowering trees and shrubs. Recreation means it's like something recreational or refreshing thing, mainly to serve as recreation forest for the urban and rural people. Means whenever you just walk through a park means in the urban areas, or through a lawn, or maybe a personal garden, your mind gets refreshed, your mood get uplifted. This is known as recreational forestry. The main purpose is raising flowering trees and shrubs. This type of forestry is also known as aesthetic forestry. Means the recreation forestry also has aesthetic values, defined as the practice of forestry with the object of developing or maintaining a forest of high scenic value. तो सिनिक वैल्यू की बात आई तो आप लोग समझ गए होंगे. इट हैज एस्थेटिक वैल्यू and the objective is raising flowering trees and shrubs. Then comes to the next part, classification of agroforestry. तो नायर के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल बेसिस, कंसिडरिंग द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग स्पैटियल एडमिक्सचर ऑफ द वुडी कंपोनेंट, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट मिक्स एरिड, टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट. मीन्स हम फॉरेस्ट लैंड को कैसे डिवाइड करते हैं इन ए स्ट्रक्चरल बेसिस. द फर्स्ट वन, either the composition, the woody component, the vertical stratification of the component mix, whether it is arid or temporal arrangements, or it is just a tropical structure of agroforestry system. Then it comes to functional basis. This is based on the major function or role of the different components of the system, mainly of the woody components, mean either for production of food, fodder, fuel wood, or so on, or for protective system, means windbreak, shelter belts, soil conservation, etc. The third one is socio-economic basis. The socio-economic basis में level of inputs of management, either low input or high input, or the intensity or scale of management. The first one is level of inputs of management, second one is the intensity or scale of management, and third one is the commercial goals, subsistence, commercial or immediate. Fourth one is ecological basis. Takes into account the environmental condition on the assumption that certain types of system can be more appropriate for certain ecological conditions. There may be a set of agroforestry system for arid and semi-arid lands. Means you have to consider the climatic and the environmental systems to grow or to do a agroforestry practice. So this is the classification or the structural and functional basis. Classification of agroforestry system on structural basis. Expected role or function of each. Types of component and arrangement. जो structural basis को consider किया जाता है तो वहाँ पे role और function को भी देखा जाता है, component and arrangement को भी consider किया जाता है. Hence, on the basis of structure, agroforestry system can be grouped into only two categories. One is nature of component, second one is arrangement of components. Nature shows the components, exact components. The second thing is that components getting arranged in which manner. This is the structural basis. Nature of components. These are very important terms. Just stay focused.
The first one is agri-silvicultural system. Agri means the crop growing. Silvi means this term can be used with the forest trees, bigger trees, forest trees. Okay. So agri-silvicultural means the forestry with crop agriculture or crop cultivation system. Second one is silvipastoral. Look, silvi means wherever this word or this prefix or suffix is used, silvi means the forestry, means the forest trees are included into it. Silvopastoral, pastoral means for pasture purpose. Pasture means जिस पे कैटल्स ग्रेज करते हैं. एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी हम फोडर इकोसिस्टम को भी पास्टरल बोला जा सकता है. थर्ड वन इज एग्रो सिल्वो पास्टरल. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, देन इट कम्स टू सिल्वो मीन्स forestries, pastoral means this grazing system, and fourth is some miscellaneous types. Let's study it one by one. First one, agri-silvicultural system. Crops and trees, including shrubs and vines, involves in the conscious and deliberate use of land for the concurrent production of agricultural crops, including tree crops and forest crops. Two things are here. Just try to remember. First one is agri means crops. Silvi means it is the conscious and deliberate use of land to grow the agricultural crops, including tree and forest crops. Okay. So look at this. Now comes the most important part. It is the important part and mostly come in the objective form. Improved fallow spaces in shifting cultivation. Agri silviculture के कुछ सब divisions भी होते हैं. Okay. The Taungia system, multi-species tree gardens, alley cropping, which is also known as hedgerow intercropping, multi-purpose trees, shrubs on farmlands, crop combination with plantation of crops, agroforestry, fuel wood production, shelter beds, windbreaks. ये एक ही तरह का है, बस a little bit of difference is there. So there are 2 points. Then soil conservation, hedges, etc. and riparian buffer. उसके बारे में हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे. So come to the second one, silvopastoral. Silvi means trees or forest trees, and pastoral means pasture system or animal grazing system or animal husbandry, the most prominent agroforestry practice, characterized by integrating trees with forage and livestock production. Traditionally, silvopastoral system involved grazing livestock in wooded rangeland and incorporating trees in pastures for shade and timber. आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. एक बार बस ये स्लाइड्स को मेरे साथ रीड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में 1-2 बार रीड कर लीजिए, उतने में ही खत्म हो जाएगा एग्रोफॉरेस्ट्री. The majority of rangeland grazing in the hills is typically comprised the grazing of natural herbaceous and shrubby vegetation for under trees such as pines, beemal, oak, etc. This system again classified into 3 categories. Which system? This is silvopastoral system. Protein bank. Second one is living fence of fodder trees and hedges. Number 3, trees and shrubs on pasture. What do we mean by protein bank? Means whenever we grow any kind of crop, means the pastures for grazing purpose, for their food purpose, for the food purpose of our livestock. Second one is living fence of fodder trees. तो ये छोटे छोटे shrubs होते हैं, छोटे छोटे bushes होते हैं जिसको हम fences की तरह यूज करते हैं या फिर hedge की तरह यूज करते हैं. That is also a kind of this. And third one is trees and shrubs on pasture. Means कुछ ऐसे trees और shrubs होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ food purpose में यूज होते हैं. एग्रो-सिल्वोपास्टरल सिस्टम, यहाँ पे 3 सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है. एक होता है फॉरेस्ट्रीज, दूसरा होता है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स मींस क्रॉप्स, एंड थर्ड वन इज पास्चर और एनिमल्स. ओके, दिस सिस्टम हैज बीन grouped into again 2 subgroups. So now it comes to home garden, oldest agroforestry practices found extensively in high rainfall areas in tropical South and Southeast Asia. Many species of trees, bushes, vegetable and other herbaceous plants are grown in dense and apparently random arrangements. Home gardens आप लोग साउथ में मीन्स केरला की कुछ मूवी के सीन में भी आप लोगों ने देखा होगा. असम के कुछ पार्ट्स में मोस्टली होम गार्डन्स हुआ करते हैं. तो वही लिखा गया है यहाँ पे, जहाँ पे जनरली हाई रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहाँ पे ज़्यादातर ये मिलता है. ट्रीज होते हैं, बुशेस होते हैं,
हर्बासियस प्लांट्स भी जनरली ग्रो कर जाते हैं इन अ वेरी डेंस मैनर एंड रैंडम अरेंजमेंट. Although some rational control over the choice of plant and their spatial arrangement, temporal arrangements may be exercised. Most home gardens also support a variety of animals. तो ये home gardens में pastures भी होते हैं, so they also support the livestock of that particular home, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वो particular area का एक pasture system की तरह वो काम भी करता है. In some places pigs are also raised. Yes, of course. We have livestock, we have birds, we can also raise pigs there. Fodder and legumes are wildly grown to meet the daily fodder requirement of cattle. तो ये होम ग्रोन किया जाता है so that बाहर से जो फूड के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको कम किया जा सकता है. ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. The waste materials from crops and homes are used as fodder feed फॉर एनिमल्स और बर्ड्स. ओके, तो जब आप होम में गार्डन इस ये एक ही बात निकलता है फ्रॉम द लास्ट 2 स्लाइड्स. जब आप होम गार्डन बनाते हो तो वहां से आपको अपने लाइव स्टॉक्स और बर्ड्स के लिए जो भी आप घर में रखते हो उसके लिए आपको खाना मिल जाता है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है. बार्न वेस्ट आर ऑल्सो यूज्ड एंड मैन्योर फॉर क्रॉप्स. बार्न वेस्ट मीन्स जब आप काव रखते हो तो काव शेड बनाते हो, पिग्स रखते हो तो पिगरी बनाते हो, तो वहां के जो वेस्ट निकल आते हैं वो अगेन मैन्योर की तरह इस्तेमाल होते हैं उन्हीं क्रॉप्स में या फिर बाहर वाले क्रॉप्स में. सो हुआ ना एक एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Then it comes to woody hedge rows. Various woody hedges, especially fast growing and coppicing fodder shrubs and trees, are planted for the purpose of browse, mulch, green manure, soil conservation, etc. The main aim of this system is production of food, fodder, fuel wood and soil conservation. जब भी हम कोई भी ऐसे क्रॉपिंग करते हैं तो उसके एक हेज होता है, तो वहां पे अगर हम कुछ प्लांटेशन ना करें, कम से कम कुछ ना हो तो ग्रासेस को भी ग्रो करने ना दे, तो वहां से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो आप एक लैंड पे अगर पैडी फार्मिंग कर रहे हो तो उसके देखेंगे आप हेज की एरिया, जितने भी हेज और एजेस की एरिया होता है वहां में कभी कभार कुछ ऐसे लेग्यूम्स, कुछ फॉडर्स उसको भी लगाया जाता है, या फिर कुछ भी ना मिले तो ग्रीन मैन्योर के लिए जो भी प्लांट्स होते हैं उसको भी उगाया जाता है वहां पे. तो इसका मेन एम यही होता है कि क्रॉप के साथ, हमारे जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ कुछ और फोडर फ्यूल वुड मिल जाए, या फिर कुछ भी ना हो तो सिर्फ और सिर्फ सॉइल कंजर्वेशन भी हो जाए. Now come to other system. Other means this is a kind of miscellaneous type apiculture with trees. So whenever in a forest land we have trees, or it may come into our community range or in our home range, so honey apiculture भी वहाँ पे practice किया जा सकता है. Honey producing tree species. Honey तो हनी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन नेक्टार जो हनी बनाने के लिए उनको जो नेक्टार की जरूरत होता है, तो वो या फिर जो पोलन ग्रेन्स वो कलेक्ट करने जाते हैं, वो उस टाइप के ट्रीज को जब ग्रो करते हैं तो एपिकल्चर वहां पे करना आसान हो जाता है. सो क्या लिखा है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग ट्री स्पेसिस फ्रीक्वेंटली विजिटेड by honeybees are planted on the boundary mixed with an agricultural crops. The main purpose of this system is the production of honey. Okay. Aqua Forestry. In this system, various trees and shrubs preferred by fish are planted on the boundary and around the fish ponds. Tree leaves are used as forage for fish. कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो कि ट्री लीव्स को खाते हैं, फोरेज करते हैं. द मेन और प्राइमरी रोल ऑफ दिस सिस्टम इज फिश प्रोडक्शन एंड बॉन्ड स्टेबलाइजेशन अराउंड फिश पॉन्ड्स. वहां पे भी वैसे ही होता है, सॉइल इरोजन को रोका जाता है और जो ट्री के लीव्स होते हैं वो थोड़े ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन अगर ज्यादा हो फिश पॉन्ड में तो वो भी हानिकारक हो जाता है फिशेस के लिए. Now it comes to multipurpose wood lots. In this system, special location specific MPTs are grown, mixed or separately planted for various purpose such as wood, fodder, soil protection, soil reclamation. देखिए अगर ट्रीज आप ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे सॉइल प्रोटेक्शन एंड सॉइल रिक्लेमेशन तो होता ही है. तो अब डिपेंड करता है आप कमर्शियल पर्पस पे कर रहे हो या फिर एस्थेटिक पर्पस के लिए ऐसे ही ग्रो कर रहे हो. So the overall thing is you can get wood, you can get fodder, you can also get soil protection, and also whenever you mix this forest system with our cropping system or with our agriculture system, you also get the crops. अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये एक दूसरा पॉइंट था, हमने वहां पे देखा था. एक है नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, सेकंड वन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स. यही होता है स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री.
The first priority to the plants, even in agroforestry system involving animals. Their management according to the definite plan, say a rotational grazing scheme, gives precedence to the plants over the animals. Such plant arrangements in multi-species combination involves in dimension of space and time. इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस एक ही बात बोला गया है, एक रोटेशनल ग्रेजिंग स्कीम हम बनाते हैं, हम अपने लाइफ स्टॉक को क्या खाने को देना चाहते हैं, यही होता है चीज। तो क्या खाने को देंगे, लेग्यूम्स देंगे, फॉडर्स देंगे, या फिर नॉर्मल ग्रासेस ही देते हैं। तो इधर प्रोटीन बैंक करेंगे या फिर उनको फाइबर के हिसाब से कुछ उनके लिए ऐसे ट्रीज ग्रो करेंगे जिसको हम फाइबर के हिसाब से उनके लिए यूज कर सकते हैं। सो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अरेंजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट प्लान। Now it is spatial arrangement. Spatial arrangements of plants in an agroforestry mixture may result in dense mixed stands as in home garden or in sparse mixed stands as in most system of trees and pastures. The species or the species mixture may be laid out in zones or strips of varying widths. There may be several forms of such zones, varying from microzonal arrangements such as alternate rows to macrozonal ones. तो स्पैटियल अरेंजमेंट में आपको जोन क्रिएट करना होता है, और वो जोन आप कैसे क्रिएट करें दैट डिपेंड्स सोलली अपॉन द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल कम्युनिटी। आप होम गार्डन में अगर अरेंजमेंट ऐसे करेंगे तो डेंस बनेगा, या फिर एक नेचुरल अरेंजमेंट अगर अपने आप ऑटोमेटिकली रैंडम अरेंजमेंट होता है तो वहां पे एक स्पार्स मिक्स स्टैंड्स बनता है। स्पार्स मीन्स जस्ट लाइक स्कैटर्ड वन। Temporal arrangement. It may also take various forms. An extreme example is the conventional shifting cultivation cycle involving 2 to 4 years of cropping, more than 15 years of fallow cycle, when a selected woody species or mixture of species may be planted. Conventional shifting cultivation cycle. What is shifting cultivation? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम आप सबने सुना होगा। एक जगह के सारे ट्रीज को हम काट देते हैं, मीन्स वहां के डिफॉरेस्टेशन हम कर देते हैं। कुछ कम्युनिटीज होते हैं जो ये इस तरह के एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर वहां को काट के वो लैंड को प्रिपेयर करते हैं। वो किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, मीन्स कोई भी क्रॉप फार्मिंग करेंगे वहां पे। मोस्टली ये हिली रीजन्स में होता है। तो 2 से 4 साल तक, मिनिमम फॉर 2 इयर्स, मैक्सिमम फॉर 4 इयर्स वो लोग वहां पे क्रॉपिंग करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्या होगा, वहां उस जगह को छोड़ के वो फिर से एक दूसरे जगह पे चले जाएंगे, फिर वहां पे वो जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जलाएंगे, एक और एरिया को डिफॉरेस्ट करेंगे, फिर डिफॉरेस्टेशन के बाद वो लैंड को प्रिपेयर करेंगे और वहां पे क्रॉपिंग करेंगे। सो इट इज द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ टेम्पोरल अरेंजमेंट। ये थोड़ी जो ठंड जगह होता है, थोड़ा सा ट्रॉपिकल से ऊपर जाने के बाद उस एरियाज में होता है। Similarly, some silvopastoral system may involve grass lays in rotation with some species of grass remaining on the land for several years. These temporal arrangements of component in agroforestry are termed coincident, concomitant, overlapping means relay cropping, separate and interpolated. So मैंने आपको एक टास्क दिया था, मल्चिंग का डेफिनेशन लिखिए, and now the second homework. Write the definition of relay cropping with examples in the comment section. Now come to functional classification of agroforestry system. Two fundamental attributes of all agroforestry systems are productivity and sustainability. So क्या 2 पॉइंट निकल के आए क्लासिफिकेशन के ऊपर? एक होता है प्रोडक्टिविटी की बेस, अनदर वन होता है सस्टेनेबिलिटी बेस। This clearly indicates that this system have two functions, productive function and sustainable function. Producing one or more products. Okay, the various productive functions, like what we get from an agroforestry system. This is the productive aspect. We can get food, we can get fodder, we can get fuel wood, we can get other woods, means the timber woods, or maybe other products like we can get honey. The communities are there who are collecting honey from the forest, also lac. Okay, these are the things. There are many forest products what we can get from our agroforestry system. This comes under productive function. Then what is sustainable? Sustainable means the protecting the environment. So it is about protective function, protecting and maintaining the production system.
इसमें क्या क्या आता है प्रोटेक्शन में और सस्टेनेबिलिटी में? विंड ब्रेक आता है, शेल्टर बेल्ट आता है, सॉइल कंजर्वेशन आता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल इंप्रूवमेंट एंड शेड। शेड मीन्स आप देखे होंगे जहाँ पे भी फॉरेस्ट लैंड होता है या फिर बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पे सबको शेड मिलता है। ओके, क्रॉप, एनिमल, मैन सब वहां पे रेस्ट करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद सॉइल इम्प्रूवमेंट तो एज वेल एज होता ही है क्योंकि कांस्टेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी एफिशिएंटली होता है। मॉइस्चर कंजर्वेशन वैसे भी होता है, जब भी आप सॉइल कंजर्वेशन करते हो मॉइस्चर कंजर्वेशन उसके साथ ही हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स। आप मैंग्रोव एरिया में जाओगे तो वहां पे देखेंगे वो शेल्टर बेल्ट्स होता है। अब देख रहे होंगे आप साल में 3-4 ऐसे ही साइक्लोन आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलरली कोस्टल स्टेट्स में, बेसिकली टू ओडिशा, टू आंध्र प्रदेश, ये जगह पे। तो क्यों होता है? कहीं ना कहीं 3-4% ही सही, ये जो हमारे जो शेल्टर बेल्ट की कमी की वजह से ये साइक्लोन्स इतने डिजास्टर्स हो रहे हैं। हो सकता है पहले भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे होंगे, लेकिन जब हम एक शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है? विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का मतलब एक शील्ड बनाते हैं बाय द फॉरेस्ट ट्रीज। तो जब आप एक शील्ड बनाते हो, वो जो विंड का जो प्रेशर होता है, वो स्पीड होता है, वो वहां पे ब्रेक होता है। इसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर होने से हम रोक सकते हैं। ज्यादा ना भी रोके तभी 50% तक वो जो जितनी हानिकारक वो होता है उसको कम किया जा सकता है। The ferocity can be reduced through this. Socio-economic classification of agroforestry system based on such socio-economic criteria, scale of production and labor technology input and management। तो एग्रोफॉरेस्ट्री को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कमर्शियल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सबसिस्टेंस सिस्टम। तो उस बारे में इतना क्वेश्चन आता नहीं है। बेस्ड ऑन द मेजर एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स आर ग्रुप्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर आप बोल सकते हैं क्लाइमेट के हिसाब से। ह्यूमिड और सब ह्यूमिड लो लैंड में, हॉट ह्यूमिड लो लैंड में एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन होते हैं। जो लो लैंड होता है ह्यूमिड और सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स होते हैं। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स तो वो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रीजंस। हमारे जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, दैट इज अ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। उसका रीजन यही है, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है और वहाँ का जो डाइवर्सिटी होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब डाइवर्सिटी इज मोर in the western Ghat of India. It supports extent of area and diversity of agroforestry and other land use systems. Because of climatic conditions that favors rapid growth of large number of plant species, various types of agroforestry plant association can be found in areas with a high human population. Various forms of home gardens, plantation of crops with combination and multi-layer tree garden in areas of low population density, trees on range lands और pastures। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, तो याद रखने वाली बात ये है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री होता है, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट एनवायरमेंट में आपके वेजिटेशन भी डिफरेंट होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। वहां का जो वेजिटेशन होता है दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड। नाउ कम टू सेमी एरिड और एरिड लैंड्स, मींस द डेजर्ट लैंड्स एग्जैक्टली। इन जनरल आप बोल सकते हैं दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनफॉल कन्फाइंड टू 9 to 20 on days in July to September, 2 to 4 wet months, vapor pressure deficit ranging from 9 MB in January to 30 MB in April। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, वेट मंथ्स बहुत कम होते हैं, सोलर रेडिएशन इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होता है, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट रीजन्स में सैंड जो स्टॉर्म आता है, सैंडी स्टॉर्म्स आता है, उसमें विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है जबकि 20 km/h होता है। हाई पोटेंशियल एवापोर ट्रांसपीरेशन मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवापोर ट्रांसपीरेशन होता है। हाई मीन एरिड इंडेक्स ज़्यादा होता है, एरिड इंडेक्स ज़्यादा होता है। Then comes to highlands. Variable rainfall, degraded and shallow lands at high altitude to deep rich soils in valleys and great climatic variations. The area is a storehouse of great biological diversity. मैंने जैसे आपको बताया वेस्टर्न घाट्स, हाईलैंड में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। The Himalayan region is an excellent example of this type of area. वेस्टर्न घाट हिमालयन रीजन्स में ही आते हैं।
Agroforestry has long encompassed many well-known land use system practices. तो यहाँ पे लिखा गया है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्रोफॉरेस्ट्री इज द लिमिटेशन. यहाँ पे लिमिटेशन क्या होता है? एन इंटीग्रेटेड फूड ट्री फार्मिंग सिस्टम व्हाइल एडवांटेजेस डज सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स. तो लिमिटेशंस मींस वी व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. एक तो इंटीग्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस होता है, लो इनपुट्स में भी हम हाई प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी कुछ बेनिफिट्स होता है, हमने पढ़ा. लेकिन इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है ये देखिए. पॉसिबल कंपटीशन ऑफ ट्रीज विथ फूड क्रॉप्स फॉर स्पेस, सनलाइट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट व्हिच में रिड्यूस फूड क्रॉप यील्ड, डैमेज टू फूड क्रॉप ड्यूरिंग ट्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस, potential of trees to serve as host to insect pests that are harmful to food crops, rapid regeneration by prolific trees which may displace food crops and take over entire field. सो ये रहा उसके जो एनवायरमेंटली क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. सोशियो इकोनॉमिक में क्या होता है? रिक्वायरमेंट फॉर मोर लेबर इनपुट्स व्हिच मे कॉज स्कार्सिटी एट टाइम्स ऑफ अदर फार्म एक्टिविटीज. तो ये जो चीजें होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ट्रीज टू ग्रो टू मैच्योरिटी एंड एक्वायर एन इकोनॉमिक वैल्यू, रेजिस्टेंस बाय फार्मर टू डिस्प्लेस फूड क्रॉप्स विद ट्रीज स्पेशली व्हेन लैंड इज स्कार्स. The fact that agroforestry is more complex, less well understood and more difficult to apply compared to single crop farm. तो क्या होता है, अगर आप बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको लगाएंगे तो हमारे जहाँ पे लैंड स्कार्सिटी एरियाज होता है वहाँ पे फूड क्रॉप के लिए जगह नहीं बचेगा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास लेबर नहीं मिलती, लेबर इनपुट जब कम होता है, अदर क्रॉप एक्टिविटी चल रहा होता है तो वहाँ पे दिक्कत आने लगती है. और एक कंपटीशन भी होता है फूड क्रॉप्स एंड ट्री क्रॉप्स के अंदर. सो एग्रीगेटेड यील्ड कभी कभार नहीं, बहुत ज्यादा तरीके से कम आता है. दो स्किलफुल मैनेजमेंट प्रैक्टिस एनी और ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड. सो अगर आप कोई भी इंटीग्रेटेड सिस्टम को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, if there is a better management practice, then every integrated system is flourishing in its own unique way. And agroforestry में क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसमें स्किलफुल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. once it is easy to adopt some, once or it is very difficult for many communities. So यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज लिखा गया है, जैसे कि सिलेक्ट लेग्यूम ट्रीज दैट हैव स्मॉल और लाइट क्राउन सो दैट सफिशिएंट सनलाइट विल रीच द फूड क्रॉप्स फॉर फोटोसिंथेसिस. सिलेक्ट ट्री स्पीसीज दैट आर डीप रूटेड सो दैट दे विल absorb moisture and nutrient from the surface layer of the soil, and space the trees farther apart to reduce their competitive effects on the food crops. So पहली बात है कि स्पेसिस सिलेक्शन. आप लिग्यूम ट्रीज को अगर लगाते हैं तो उस बारे में भी आपको सोचना होगा. आप कैसे कंपटीशन को कम कर सकते हैं विद द फूड ट्रीज, और फूड क्रॉप के बीच में भी कंपटीशन को रिड्यूस करना है, उन ट्रीज में आपस में भी वो कंपटीशन को रिड्यूस करना है. उसके साथ एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को भी बहुत स्किलफुली मैनेज करना है. So thank you for being with us. So like, share and subscribe our channel for more updates. Thank you so much and all the very best.